ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ସହିତ କଣ କହୁଛି ନା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା the India is and India will be governed directly by the British Crown. So India will be directly governed by the British Crown. So that is political. And if we discuss about the social religious, so now after the Queen's proclamation, the company, the British government will not interfere in the socio-religious life of the people of India. Socio-religious life of the people of India. And the most important thing is economic, because so in the economic field, what the revenue collected will be spent in India for the welfare of the people of India. जो रेवेन्यू टैक्स से कलेक्ट करेंगे से भारतीय मानकर कौन पाई भारतीय मानकर सुविधा पाई से माने भारत रे खर्च करेंगे कौन हबनी ड्रेन ऑफ वेल्थ आउ हबर है क्वीन्स प्रोक्लेमेशन कला so with the Queen's proclamation they got a lesson so if we discuss about the Indian economy from 1857 till 1947, so first we'll discuss disruption of traditional or village economy, the second ruin of arts and crafts, and the third industrial development. So disruption of traditional or village economy. So if we discuss about the disruption of traditional and village economy, so we'll discuss the villages were the units of India's economy. From the time immemorial, villages in India were merely self-sufficient. The villagers produce many agricultural products, including rice, wheat, oilseeds, pulses, sugar, and cotton. That is so far the traditional economy is concerned. That is so far the village economy is concerned. Then what happened? What influenced the Indian economy? So in short, I can say the peasants, artisans from villages and towns and traders were the pillars of Indian economy. Who were the pillars of Indian economy? The peasants, the artisans and the traders were the pillars of Indian economy. In the 18th century, Indian economy was healthy and prosperous. In the 18th century, before coming of the Britishers, the Indian economy was healthy and prosperous. The British industrial and economic policies disrupted this traditional economy or village economy in India. What happened? So because of the faulty policies of the English East India Company or the British government, what happened? The peasants, the artisans from the villages and towns and the traders who were the pillars of Indian economy. So their policies, their livelihood would become disrupted because of the faulty policies of the English East India Company or the British government. So, if we discuss about the disruption of the traditional economy or the village economy is concerned, so that has been disrupted. Can I cite an example? Good example, the Indian weavers. So the Indian weavers, भारतर बुणाली जदि मत टिके जीवा पई कहबो से कास्ट पाकु मु कहबी भारतीय बुणाली बा भारतर वेभर माने से माने कोन करथले ना निजे लुगा तयारी करथले बट with the introduction of the industrial revolution, with the coming of the industrial revolution in England, that affected the Indian economy. So the small scale industry and the cottage industry in India were done away with the influence of the impact of the industrial revolution. Yes, कौन
कौन कहला कौन होतला how that affected the Indian economy रचना how that affected the Indian economy so मोर तुमको कहबार थिला disruption of traditional और village economy से जो small scale industry थिला कॉटेज इंडस्ट्री थिला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थिला छोटिया छोटिया शिल्प एवं कॉटेज इंडस्ट्री थिला कुटीर शिल्प they were done away with the introduction of the industrial revolution in England. And secondly, what are the second point? Ruin of arts and crafts. The ruin of arts and crafts. The textile industry was first large-scale industry to grow in England. The textile industry was the first large-scale industry to grow in England. Textile fabrics formed a major part of exports from India to England. Britain wanted to restrict the import of Indian handlooms, cotton textile to England. With this and in view, the British rulers imposed heavy duties on Indian handlooms, textile goods, both where they were shipped from India and when they were unloaded in England. So, with the coming of the industrial revolution, you will find the ruin of arts and crafts. There was severe ruin of arts and crafts with the decline of and with the coming of the industrial revolution. Then what happened? If you want to, you can write. If you want, you can write. With the decline of various arts and crafts, the vast majority of artisans lost their traditional professions. Having been deprived of their means of subsistence, the weavers, hello. Yes, sir. Yes. Yes. Weavers, artisans, and craftsmen were compelled to fall back on agriculture. कौन हला कहले जेतेबेले आर्ट एंड क्राफ्ट रो पतन घटला आर्टिसियन माने आर्ट कलेनी वीवर माने समाने लुगा बुनिले नहीं समाने कौन कले एटा बनाइले तो कहती हो से कौन बंद करे ताको से समाने कौन कले समाने कृषि मुहाल so that was the second impact. And thirdly, so after the industrial revolution and the economic policies of the English East India Company and the British government, you will find industrial development in India from 1857 till 1957 सब चीजें किंतु मुंह देखा जाए से कैमराटा कोन है सो आइया
So, so industrial development. What is the industrial development in India from 1857 till 1947? এটা টিকে দেখিদেবা, এটা টিকে আমার টিকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ଅଛି দেখো। an important development. Hello, Rachana. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You wanted to say something? No, sir. Voice are not clear. Yeah. Yes. There may be some technical problems, maybe in the so there may be some technical problem. Yes, industrial development. So what is the industrial development in India, particularly from 1857 till 1947? Please write down. An important development in the second half of the 19th century. An important development in the second half of the 19th century. Was the establishment of large-scale industries in India. Was the establishment of large-scale industries in India. Can you tell me what are the important industry? We have come across from 1857 to 1947. 1857 मसीहारू 1947 मसीहा पर्यंत जदि आमे देखिबा ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. गायत्री Sir. Yes, गायत्री. sir. Yes. 1857 from 1857 till 1947. If we discuss about the growth of modern industry in India, what are the industry we have come across in India from 1857 till 1947? को important industry थिला पहले मुद्रे? Textile Budeswar, industry. Rachana. Yes, very good. Textile industry. Then second is jute industry, and the third is coal mining industries. So it तीनटा major industry. So I'm लिखिबा textile, write down, textile, jute and coal mining industries were started. Textile, jute and coal mining industries were started in the 1850s. Stop. Other mechanical industries which developed during the second half of 19th century. And the beginning of the 20th century. Included cotton, rice, flour, 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 timber, leather, woolen, paper and sugar. Next, most of the modern industries were introduced to serve the interest of British. The most important point is that
The most important point is that most of the industries were owned by OWNED, owned by British capitalists. The British capitalists also gained immensely from the plantation industries like tea, coffee, and indigo. All the tea gardens were owned by them. The industrial growth of India was very slow. During the period Germany, United States of America, USSR, and other European countries were progressing rapidly. The net result of British economic policies was the spread of poverty and recurrence of feminism. Stop. British economic exploitation, the decay of indigenous industries, the slow growth of modern industries, high taxation, the drain of wealth to Britain, and non-introduction of Rachana, Rachana, you want to say something? Hello? Non-introduction of modern agricultural techniques reduce the Indian people to extreme poverty. So, from 1857 till 1957, if we discuss about the economic policies and economic impact, so we must discuss the disruption of traditional or village economy, ruin of arts and crafts, and the industrial development. Then, the economic policy under British Crown rule, another sentence, the economic policy under the British Crown rule in India was subservient to large interest of Great Britain. The economic policy, this is a very important sentence, the economic policy under British Crown
After the end of company came the crown. So economic policy under the British crown in India was subservient to the larger interest of Great Britain or England. In the latter half of 19th century, many European countries, in the latter half of the 19th century, many European countries imposed high custom duties to protect their indigenous industries against dumping of British industrial products. To, to, to compensate British industry for its loss of markets, if Europe, the British government forced the government of India to adopt the policy of free trade and open Indian markets for unlimited sale of British industrial goods. So, so in a nutshell, if we discuss about the if we discuss about the in a nutshell, if we discuss about the economic policies of the English East India Company or the British government from 1857 till 1957, that was guided by the needs of the British industry. That was guided by the needs of the British industry. That was hello. Hello. ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ଅଛି so again is a ignorant student so that was guided by the British. In a nutshell, I can say, so the British economic policies and the economic impact that was guided by the British industry. And now we'll discuss about the land settlement from 1857 till 1947. The land tenure and the land revenue policy of the British Indian government divided the agricultural class into two rival camps, the Jamindar class versus the tenants, the agricultural labor. I have already told you. So during the discussion of permanent settlement, so the dark side of the permanent settlement was they created or more appropriately they divided the Indian society into two. One, the Jamindar, the owners, and at the top and at the bottom you will find the peasants, the laborers, or the actual tillers of the land. So the land tenure and the land revenue policy of the British Indian government divided into agricultural class into two rival camps, the Jamindar class versus the tenants and the agricultural labor. So similarly, the fate of industrial workers was no better under the British rule. Please write down this sentence. The fate of the industrial workers was no better under the Crown rule. That is from 1858 till 1947 under the Crown rule. Unable to compete with the British industrial products. Again, you can write unable to compete with the British industrial products available in the Indian markets, the Indian industrialists tried to economize, which took the form of payment of inadequate wages to the workers, long hours of work, and even the employment of child labor in factories. Hello. Sir, देखो after you call back.
आउते कहूँ एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनसा माने कहीं ट्रेड यूनियन गुड़ा मूवमेंट देखा देला बिकॉज ऑफ दिस कौन हला why the trade unions emerged because of this because of the industry से industry में तुम कहूँ unable to compete with the British industrial products available in the Indian markets. The Indian industrialists tried to economize, which took the form of payment of inadequate wages to the workers, long hours of work, and even employment of child labor in factories. तीनटा जिनस करतुले कौन करतुले तीनटा जिनस से करतुले बहुत समय काम कराउतुले कम पैसा दउतुले नंबर 1 नंबर 2 कौन करतुले तागर टाइम किछि नथिला तापरे थर्ड हला चाइल्ड मानकु छोट छोट पिला मानकु हजार्स इंडस्ट्री माने विपदपूर्ण इंडस्ट्री से माने काम दउतुले so therefore the trade union movement started so trade union movement उड़ा आरंभ होइतिला and here you can write no doubt the trade union movement began in India with two organizations of All India Trade Union Congress, which was set up in the year 1920. I have already told you. The All India Trade Union Congress was set up in the year 1920 to give the help, to give a helping hand so far the industrial workers are concerned. The second is in 1929, another trade union organization was set up, and that was popularly known as All India Trade Union Federation. So please remember, All India Trade Union Congress was set up in the year 1920, and secondly, All India Trade Union Federation was set up in the year 1929. And why these trade union were emerged? So they emerged to give justice to the industrial workers for their working hours and for the children employed in the hazardous industries. Yes. Then for the country in general, the situation for the now we'll conclude in this way. So for the country in general, in this situation, I have already told you. So far the economic historians, so far the nationalists are concerned. There's some nationalist and economic historians like R.C. Dutt, Dadabhai Naroji, M.G. Ranade. So they wrote some book, and that spread the consciousness among the people of India. So economic sphere, I have already told you. So if we discuss about R.C. Dutt, Ramesh Chandra Dutt, so in 2 volumes, the economic history of India. So he said how the Indian manufacturers were replaced by the British manufacturers. And what is that? So R.C. Dutt, Ramesh Chandra Dutt, in his book, The Economic History of India, he described the Indian manufacturers were replaced by the British manufacturers, and how the British industry grown up or expanded at the expense of the Indian industries. What is that? So R.C. Dutt the how Indian manufacturers were replaced by the British manufacturers. That means that British manufacturers asile setale Bharatar manufacturers mane स्थानांतरित हो गले ता माने कोन जेतेबेले मैन्युफैक्चर माने उत्पादनकारी गोष्ठी माने मु रफ रे तुम कति कहि परिबी जेतेले इंडियन वीवर्स माने स्थानांतरित हो गले जेतेबेले इंग्लैंड रो लोगा तयारी के आसेला सो the effort of the select committee according to R.C. Dutt
was that. So he described how Indian manufacturers were replaced by the British manufacturers. And second was how British industry expanded or grown up at the expense of Indian industry. तापरे ब्रिटिश शिल्प बढ़ी चलला कहार कांधरे गोड़ थोई ना भारतीय शिल्पर कांधरे गोड़ थोई ब्रिटिश शिल्प बढ़ी चलिला. So that is so far as the economic policy is concerned. That is so far as the economic impact is concerned. So भारतीय शिल्प उपरे शिल्पर कांध उपरे गोड़ थोई सब ब्रिटिश शिल्प बढ़ी चलला. गोटे छोटे सेंटेंस रे मु कहि पारिबी. So that was guided by the British industry. So British शिल्प जहाँ चाहूला भारत शिल्प से आदोला. So at 87 जो जिनस कहती से जिनस तुम टे कहि देबी लास्ट रे. So कौन लिखिबा जे हम सम अप करिया. For the country in general, the situation whether it was in the field of development or modernization of agriculture was that of underdevelopment. Gayatri. For the country in general, the situation whether it was in the field of industrial development or modernization of agriculture was that of underdevelopment. Indian nationalist leaders like Dada Bhai Nauroji, M.G. Ranade, hello, Yes, sir. can you tell me the name of the book written by Dada Bhai Nauroji so far Indian economy is concerned? Gayatri, can you tell me the name of the book written by Dada Bhai Nauroji so far Indian economy is concerned? Indian poverty and on-British rule in India. Very good. So Indian poverty and non-British rule in India. And can you tell me the book of M.G. Ranade? The essays on Anybody? Indian economy. Essays on Indian economy. Yes, very good. This is very good. Yes, very good. So essays on Indian economy. So another M.G. Ranade, G.B. Joshi, and Arsidat. Arsidat strongly criticized the economic policies. Of the Indian government. From 1857 till 1947. From 1857 till 1947. Dada Bhai Nauroji's famous book, please write down. Dada Bhai Nauroji's famous book, Indian Poverty and On-British Rule in India. Held British policies, held British policies responsible for the growing poverty of India. Responsible for the growing poverty of India. I have already told you. And you see the title of the book, Indian Poverty and On-British Rule in India. Why India has been named? Why India was a poverty-stricken country? Because of the faulty policies of the English East India Company. Because of the faulty rule of the English East India Company. So British सरकारଙ୍କର माने
खराब शासन पाई ब्रिटिश सरकार कर खराब शासन पाई सो भारत रो दारिद्र्य देखा देला सेति से कहउछन्ती कोन कहउछन्ती the Indian poverty and on British rule in India. Indian poverty is due to the British rule in India. ता माने हला Indian poverty is the due to the British rule in India. Next, and accused Britain of bleeding India, BLEEDING, BLEEDING, bleeding India. White, bleeding India, white. Stop. Jawaharlal Nehru used more blunt language when he wrote British and Indian economic interests, British and Indian economic interests conflict all along the line. Stop. The logical corollary of this statement was that only India's freedom from British colonial rule could improve the economic position of India. So this is in nutshell the Indian economic or the economic history of India. So from 1857 till 1947, 1857 मसीहारू 1947 मसीहा मध्य ब्रिटिश सरकार अर्थनैतिक नीति एवं अर्थनैतिक प्रभाव 1857 रु 1947 मध्य मु तुमको आउ थे कही दूची जतले मु 1857 कथा कहूची 1857 कथा कहूची सेतबेले मु तुमको एति कहितली जे जतले रिवोल्ट हला से रिवोल्ट को ब्रिटिश सरकार दमन कर दी सारिया परे सेतबेले समाने ताकर इंपैक्ट ताकर प्रभाव तीनटा ऊपर पड़ला गोटे राजनैतिक आउ गोटे सामाजिक एवं धर्मनैतिक आउ गोटे अर्थनैतिक सो राजनैतिक क्षेत्र में यदि हम देखिबा सो इन द पॉलिटिकल फील्ड so from 1858 onwards there was the end of the company rule in India. भारत रे कंपनी शासन रो अवसान घटला with the Queen's Proclamation of 1858 1858 मसीहा रानी को आदेशनामा सहित भारत रे कंपनी शासन रो अवसान घटला सो वर्तमान भारत क्या द्वारा शासित हम ना डायरेक्टली प्रत्यक्ष भाव ब्रिटिश राजतंत्र सहित ब्रिटिश राजतंत्र जरिया शासित हम सो नाउ द इंडिया शुड बी गवर्न इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आ कंपनी रहिबो नाही कंपनी शासन अवसान घटला आ सामाजिक आ धर्मनैतिक क्षेत्र रे कोन हला So, with Queen's Proclamation of 1858, now the British government will not intervene
will not interfere in the social and the religious life of the people of India. सामाजिक एवं धर्मनैतिक जीवन रे समान हस्तक्षेप करिवे नाही। कोन सामाजिक धर्मनैतिक जीवन हस्तक्षेप करथिले गायत्री? हेलो यस सर। सर आगरो जो सामाजिक जो सब प्रथा थिला ताको उच्छेद करबो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेवडा को सब उच्छेद कर देबे लाइक सती लाइक चाइल्ड इन्फेंटिसाइड सत्य रह प्रथा लाइक हां सो जति जहाँ थिला समाने कौन करिवे ना सामाजिक एवं धर्मनैतिक जीवन भारतीय मानकर हस्तक्षेप समाने करिवे नाही। सपोज आउट जिन कहते 857 बड़े रिवोल्ट वाले सामने कहले द इंडियन शिपर्स आर नॉट अलाउड टू पुट तिलक इन देयर forehead. The Indian शिपर्स आर नॉट अलाउड टू पुट तिलक इन देयर forehead. सेमाने समानकर कपाळे चंदन लगे पारिबे नाही। सो एटा गोटे ताकर प्रथा सेटा सेमाने बंद कले। So that is social and religious is concerned. Economic रे कौन है? Economic रे from 1858 onward, सेमाने कहउछन्ती the what revenue collected from the people of India will be spent for the welfare of the people of India. जो revenue collect हब भारत सेटा से revenue टा भारत रे भारतीय मानकर हित पाई खर्च हो। भारत रे भारतीय मानकर हित पाई खर्च हो। सो पुलिस प्रोक्लामेशन तीनटा इंपोर्टेंट जिंस कहला गोटे राजनैतिक क्षेत्र रे सामाजिक धर्मनैतिक क्षेत्र रे एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे। सो वर्तमान जदियो 1857 मसीहा महान विप्लव को सामान्य दृढ़ हस्तर दमन कले स्टिल देन दे गॉट अ लेसन। तेरे सुधा गोटे लेसन पाइले जो थे से आग को जाई पारिबे नाही एवं आउ कौन है। सो 1858 रे परे भारत को ब्रिटिश राजतंत्र जने प्रतिनिधि आसिले ताकर डेजिग्नेशन कौन रहिला? कहती यात्री हेलो यस सर को मु कहती बुझी पालेन 7 ना बुझी पालन यस सेट में तमा कोई पर कोन कह दियंत। सो 1858 परे भारत को जो माने शासन करिया को आसिले भारत जो माने शासन कले ताकर डेजिग्नेशन ता कोन रहिला समय कौन बोली कहगला कौन बोली कहगला बुझिपारे जमती गवर्नर जनरल आम कहते 1857 पूर्व बर्तमान कौन कहगला वाइसरॉय कहगला ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। So in the designation of viceroy will rule India. So तार डेजिग्नेशन कौन रहा वाइसरॉय। सो 1757 पूर्व 1857 पूर्व से गवर्नर जनरल 1857 पर वाइसरॉय जड़े वाइसरॉय आसवे से शासन करेंगे। सो मोर तुम कहया कथा जदि आम अर्थनैतिक नीति देखा 1857 रू 1947 तो यही अर्थनैतिक क्षेत्र घटी। एक नंबर तुम कही डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल और विलेज इकोनॉमी। सो जो ग्राम्य अर्थनीति को प्रभावित जिनस गुड़ा को बंद हो गला लाइक द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया वर डन अवे विथ। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल और विलेज इकोनॉमी कौन? द एबोलिशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द कॉटेज इंडस्ट्री। छोट छोट शिल्प एवं कुटीर शिल्प तुम कही
कौन कही जिते गोटे गोटे वेभर कौन करूला से लुगा तैयारी करूला संध्या जीव लुगा बिक्री करने जीव एवं रात किसी पैसा नहीं फेर से तार र मेटेरियल आने लाइक कटन आन कलर आन तार लाइवलीहुड चाउल डाली भल मंद नहीं आस जो लुगा इंग्लैंड या लुगा चली आसला भारत को से सी कौन कला ना आर लुगा को कहीं नेले ना सो the small scale industry and the cottage industry in India were done away with industrial revolution. So जहाँ भी तमें कह सो भारत अर्थनीति को से विपर्यस्त कर 1757 1857 बहुत मात्रा कर 1858 कमीगला बट जेहेतु इंग्लैंड लोक गुड़ा कैपिटलिस्ट टी गार्डन से कैपिटलिस्ट किए इंग्लैंड लोक मैंने सो से प्रॉफिट बहुत करते भारतीय माने से पशि पार न सो दैट वाज द एफेक्ट सो से प्रभावित होता सो सेकंड कहली रुइन्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सार लेफ्ट हो गए ना सर म्यूट अच्छे आपनकर सर आपनकर म्यूट अच्छी सर किसी सुना जाऊ नहीं म्यूट अच्छी हेलो हेलो यस सर आज्ञा हाँ यस सर कौन गोटे बंद है सो तापर कौन है रुइन्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सो जिते से इंडियन वेभर भी हो जिते तार बंद हो से एग्रीकल्चर आड़ को मुहे से एग्रीकल्चर आड़ को मुहे सो 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 से एग्रीकल्चर आड़ को मुहे मैडम नमस्कार ऑनलाइन क्लास अच्छी इग्नोर so agriculture को मुहे and the last is industrial development so so with the growth of modern industries so the modern industry मालिक मान किए रहे so modern industry मालिक मान रहे all the Europeans so directly by indirectly so they exploited Indian people से माने भारतीय मानों को exploit कर ले so in a nutshell मुझे यदि कही from 1857 till 1947 yes due to the faulty economic policies of the British government so poverty came and the people of India were exploited and the condition of the people became miserable during the period from 1857 till 1947 so यदि हमें पूरा पूरा से पीरियड टाक नवा सो अर्थनैतिक नीति जो भूल अर्थनैतिक नीति जो से भारत प्रभावित हो हाँ यस सो इन नॉट सेल मु तुमको या कहली आ काली मु तुमको
हेलो यस सर आज बहुत समस्या अछि तेणु तेणु मु काले पढ़े पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 till 2000 पर्यंत चलियो 19 जे हम ग्लोबलाइजेशन का छाड़ दो तापर पर्यंत जीवा यस एनीथिंग यू वांट टू आस्क पचार कौन पचारे एपटू गला टिके असुविधा हो बट सेमती किसी असुविधा नहीं मु कहते जो बही कहती बही लिख तमें आरसी दत्त कथा कहती आ कौन कहती दादा भाई नारोज कथा कहती एमजी रानाडे कथा कहती इंडिया टुडे आरपी दत्त कथा कहती गोटे से बहीटा जदि पार कौटे किए देखीदब बेटर बही मो पाखे अच्छी बेसी इग्नोर मटेरियल टा खराब नहीं बट बहुत भास्ट अच्छी तुम कम समय पढ़ापी ठीक नुह बहुत भल मटेरियल मुझे कहबी इग्नोर मटेरियल टा बहुत भल मटेरियल बट बहुत भास्ट मु तुमको बर्तमान सुधा भी जी जहाँ पढ़े तुमको तुम इग्नोर किसी भी ना बिकज दिस ट्रेडिशनल किसी ये ना तो देखा पड़ो यस मतलब कौन पचार पचार मु प्लान करती नेक्स्ट क्लास रे मु पढ़ेबी इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और लास्ट क्लास रे पढ़ेबी टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मुझे प्लान कर मोर प्लान है नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी द इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एवं तापर लास्ट क्लास रे पढ़ेबी एटा आज बहुत कम पिला अच्छा बहुत पढ़ेले बोधे ना बुधेश्वर पढ़ेला बोधे बुधेश्वर सारे से पढ़े बुधेश्वर पढ़ेला यस एनीथिंग यू कैन आस्क तुम पाठ विषय कौन कौ पाठ विषय पचारि पार तुम जहाँ पचार पाठ कथा पचारि पार मु लास्ट 15-20 मिनट से रखी था ये रखी था लास्ट 15 to 20 मिनट्स रखी था ये फिजिकल मोड रे पढ़ाटा को मु पसंद कर सब फिजिकल मोड रे पचारि पारि तुम जानी पारि तुम फेस को देखी जानी पारि तुम ये असुविधा रहा कि रहा ना बट ऑनलाइन मोड रे सीटा हमको असुविधा है ऑनलाइन मोड रे कौन है कोविड टाइम रे ऑनलाइन मोड इंट्रोडक्शन हमें भी जान नु ऑनलाइन मोड रे कौन सो हमको भी कहगला जे तुम ऑनलाइन मोड रे पढ़ाया ऑनलाइन मोड रे पढ़ाया तेणु आम ऑनलाइन मोड रे पढ़ेलु जो सरकार कहले कोविड पर बहुत टीचर चाहिए आम घरे रही ऑनलाइन मोड रे पढ़ेबू आउ कॉलेज आसबू ना सरकार स्ट्रिक्टली कहदे ना आपण मैंने ऑनलाइन मोड रे पढ़े पारे ना आप ऑफलाइन पढ़े तेणु पुणी आम ऑफलाइन को गलु तेणु से सब बड़े आम भावु जे मोडटा भल मोडटा तेणु यस एनीथिंग यू कैन आस्क नुआ कि आज तो बहुत पिला सौम्य जीत बोधे नुआ सर मु नुआ आसी नुआ आज्ञा सर मु नुआ आसी आज फास्ट आसिलो फर्स्ट क्लास आज्ञा हम फर्स्ट क्लास ठीक अछि मु जानि पर मु तो मु फिजिकली जानि पारंती बट एठो देखि जानि परती समस्त जानि परिबनी किछि स्क्रीन आछन मु जानि परती आज्ञा जानि परती नो प्रॉब्लम गायत्री कौन पचारि हो नहीं सर गायत्री क्या नहीं सब बुझे सब बुझ मो पचारि सर पढ़ेला पर
सर पढ़िला पर जना पड़े को डाउट अछि कौन डाउट अच्छी किसी ना तुम खाली गोटे बहुत ये जिनस देखो जे एति बार आज जिते बार पढ़ेली से पर्यंत किसी ना काली टे आसो कहीं प्लान फान गुड़ा कल आसो काली बेसी मुझे तुमको लिखापी कहि प्लान फान आसो सो पॉलिसीज गुड़ा आसो नुआ पॉलिसीज गुड़ा आम आगुरी पढ़ुलु भी तुम भी पढ़ गोटे पीरियड पर्यंत दैट इज 1947 पर्यंत पढ़ तो आम बर्तमान आगू गलु 1947 पर कौन पॉलिसी से आमको पढ़ापी पड़ो तो सहीटा किसी समस्या हबार ना मुझे समस्त कही जार जो समस्या मत कहीपर ऑनलाइन मोड्रे युवा सब आसुच्चे बर्तमान कहते ऑनलाइन मोड्रे नापी आम नवस्था को एक्सेप्ट करवा एक्सेप्ट न कर किसी ये ना सो इकोनॉमिक पॉलिसीज सब देख तुम कहल जो बईटा ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम पेपरटा है 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1700 सी टिल 2000 सी हाँ कि नहीं गायत्री आगे आगे यस यस बट तुम्हें कौन कर ना तुम से जिन रखी चेंज कर दे पार कौन कर द हिस्ट्री ऑफ तुम तुम कहीपर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1700 सी टिल 2000 सी कर और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1700 सी टिल 2000 सी से भी तुम कर दे पार आम जानवा दरकार मुझे तुमको आज आ गोटे जिन कहली बेसी समय नष्ट कलिनी से गोटे कहली लैंडमार्क और वाटरमार्क एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तुम जन इतिहास छात्र व छात्री मु जन इतिहास छात्र सो आम सब जानवा कथा मुझे तुम कही द डिफरेंस बिटवीन वार एंड बैटल सो सेमती सो आम कौ गोटे लैंडमार्क आ गोटे कौ वाटरमार्क सो से लैंडमार्कटा कौन लैंडमार्क है इम्पोर्टाट लैंडमार्क सिग्निफिकेंस बेसी वाटरमार्क है लेस इम्पोर्टाट एवं वाटरमार्क सिग्निफिकेंस कम से कहली 1919 इज ए लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज कहीं कहली 1919 में कौन है व्हाट इज द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तुम कहल जे कमिंग ऑफ द Montague transport reforms, introduction of oral act or the incident of Jallianwala Bagh massacre. आ गोटे कहल मोहनदास करमचंद गांधी actively joined the Indian national politics in the year 1919. So से कहूँ लैंडमार्क सो से लैंडमार्क कहूँ कहीं ना जो इम्पोर्टाट इवेंट जो लेस इम्पोर्टाट आम कहू वाटरमार्क लेस इम्पोर्टाट जेटा बहुत इम्पोर्टाट ताको आम कहू लैंडमार्क सो से जिनसा को आम जानवा कथा स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इतिहास छात्र और छात्री भाव एवं आउ गोटे जिन तुम जान पीरियड मुझे तुमको प्रथम क्लास रे कही 1700 मसीह 2000 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 फ्रॉम 1700 टू 2000 सो इतिहास सब गोटे टाइम था सो पीरियड था सब जगार भी पीरियड था जमती मत कहुई तुम 5टा ରୁ 7ଟା पर्यंत क्लास नब 1 तारीख दिन क्लास नब 1 तारीख दिन नब ना सो सेमती गोटे डेट था से पीरियडटा इम्पोर्टेंट से पीरियड जो आम इतिहास पीरियड टाक देखो सो प्रथम से जो स्टार्टिंग पीरियड एवं एंडिंग पीरियड बिगिनिंग एंड एंडिंग सो तार हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आम जाना सो कहीं 1700 मसीह कौन है एवं 2000 मसीह कौन है
1700 मसीह 2000 मसीहा पर्यंत सो भारतर अर्थनैतिक इतिहास सो इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1700 till 2000 सो सेटा जानिबा कथा सेटा गुड जानिगला आ किछि सेमति असुविधा नै को आउ कोन लास्ट दिन तो कथा हिया आउ कोनटा बारी जा बारी मत पचार दबो किछि असुविधा नै नै गुटे तमे क्लास नला बेले गुटे पिला एग्रो रे पिलाटा फोन करना से कहूँ मु फास्ट इयर एग्रो कहूँ मुझे कही बहुत आगुरी जे मत फोन करियो तमे इवनिंग रे एवं प्रिफरेबली 8:30 पर क्या मु मोर जो असाइनमेंट गुटा रखी सब 8:30 भितर रखी सी देखो संध्या बेले क्लास रे अच्छी से फोन कलानी फोन करती मुझे क्लास सरला बेले रिंग बैक करी से बेले बेले मन पड़े भूली भाली जी कौन काम फाम पड़ो मोर भूली भाली जी तुम जो जहाँ मत फोन कर मत इवनिंग आवर फोन कर प्रिफरेबली 8:30 पर फोन कले ठीक ठाक थी मैंने 8:30 पर मोर काम फाम सर जाइए असाइनमेंट फेसाइनमेंट जो भल मंद थी सब सर जाइए तेणु मत फोन कले कि असुविधा से जगह ना बुझिपाल दिया कह काली काली पढ़ना देखिए कौन हो मत तुम कह जिते असुविधा पड़ो तुम कहीदे पार जिते असुविधा पड़ो कहीदे पार तुम गोटे जान गायत्री तुलसी वोमेन्स कॉलेज केन्द्रापड़ा आज्ञा सर जान आज्ञा मुझे कॉलेज कॉलेज जा 2-4 थर जा गोटे ये क्लास नहीं ऑनलाइन रे गोटे सेमिनार से कोऑर्डिनेट करते बोधे से जाइए तो तुलसी वोमेन्स कॉलेज केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस आरपट रास्ता से पड़े ना तुलसी वोमेन्स कॉलेज केन्द्रापड़ा आरपट रास्ता से मो सांगटा भी बर्तमान प्रिंसिपल अच्छी मो क्लासमेट गोटे मो क्लासमेट नहीं मो बैचमेट प्रिंसिपल अच्छे से ही कही कॉलेज बेसी कॉलेज सहित तुम टच रहा भल हम रिसेंटली आसनी मालकानगिरी जाइए ये जो तुम फर्स्ट इयर क्लास पर सेकेंड इयर फर्स्ट सेमिस्टर पर सेकेंड सेमिस्टर पूर्व से मालकानगिरी वाला डाकी मत गोटे तो रेलवे हेलो हेलो आज्ञा सर एम आई ऑडिबल हेलो यस सर आज बहुत समस्या कर कौन दिन समस्या कर ना बट आज ये समस्या आम पाचु बर्तमान कह सौम्यजित तुम कौन सुविधा असुविधा तुम कौन ये भुवनेश्वर सर मोर घर पुरी तुम सेंट्रल एससीएस कॉलेज पुरी आज्ञा सर ठीक अच्छे क्या ये आरसी सहित आम एसोसिएटेड होचु एसएस कॉलेज पुरी थी सब गोटे गोटे जगह सब डिस्ट्रिक्ट रखिए तो से कहले एसएस कॉलेज पुरी हेलो सरस्वती हाँ सर कौन तुम कौन समस्या नहीं समस्या तो अच्छे आगु तो जानी पार नथली क्लास गुला आपन को नंबर तो
ମୁଁ କାଲିଠୁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆଉ ମୋ ନମ୍ବରଟା ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି। ମୁଁ ମତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିନଥିଲି ମୁଁ। ଫୋନ୍ କରିବ କହିବ ମତେ ଇଭିନିଂରେ କରିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଥାଏ ନା ମୋର। ନାଇଁ ନମ୍ବରଟା ସାର୍ ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି, କାଲିଠୁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ହୁଁ ମୋ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ନମ୍ବର ମୋ ମୋ ପାଇ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ହଁ ସାର୍। ଲେଖ 94374 374 ହଁ 94374 ଆଜ୍ଞା 00 00 467। 467 ହଁ ସାର୍। ତମେ କୋଉଠି ତମର ନେଟିଭ୍ କୋଉଠି ଅଛ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋଉଠି ସାର୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋଉଠି? ଆଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏରିଆ। ରାୟପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ରାୟପୁର କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିଲି, ଚାକିରି କରିଥିଲି। ସେଟା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଥିଲା, ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଥିଲି 86 ରୁ 88 ରାୟପୁର କଲେଜ। ରାୟପୁର କଲେଜ ତମେ ରାୟପୁର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ରାୟପୁରରେ ଥିଲି, କରଞ୍ଜିଆରେ ଥିଲି, ଉଦଳାରେ ଥିଲି, ଯଶୀପୁରରେ ଥିଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ତମର ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାରେ ଥିଲି। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିଲି ମୁଁ 86 ରୁ 88। 86 ରୁ 88 ଥିଲି ରାୟରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ। ନଦୀ ଥିଲା, ନଦୀଟାକୁ ପାରି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଟାଉନରୁ। ନଦୀଟା ପଡ଼େ ମାନେ ବହୁତ ତାର ମାନେ ନିଚା ନଦୀଟା, ବର୍ଷା ଦିନ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଅଡିଓ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଭଏସ୍ ଆସୁନି। ଆରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲାଣି ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଏତେ ସମୟ ହ୍ୟାଲୋ। यस सर। ଆଜି ବହୁତ ସମସ୍ୟା କଲାଣି ଗାୟତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଯିବା, ଆଜି ବହୁତ ସମସ୍ୟା କଲାଣି। କାହିଁ ଆଜି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ଯିବା, କାଲି ଦେଖା ହବ। ଚାଲ ବାଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ